Welcome back. In this particular video, we are talking about the solution of chapter number 1, that is Computer System of Information Practice grade 11. Questions are taken from NCERT textbook, so we can say it is NCERT textbooks back exercise solution. हम इस particular chapter को most probably 2 या 3 different videos में cover करेंगे and it is part number 1 of this particular topic. इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए एक पीडीएफ फाइल भी रेडी की है जिसे आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में जाकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट बिकॉज इट गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी टू डू मच बेटर फॉर यू ऑल। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। It is saying that name the software required to make a computer functional. Write down its 2 primary functions. Now we all know there are 2 different types of software. One is system software and second is application software. And system software mostly we call it operating system. So we can say operating system is the software which is required to make a computer functional. And operating system की जब हम बात करते हैं, we all know that which manages your computer system. It is a manager of your computer system and there are various functions of operating system like कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज आपके सीपीयू में होती है या जो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। वन इज मेमोरी मैनेजमेंट एंड सेकंड इज व्हाट रिसोर्स मैनेजमेंट। द मीनिंग ऑफ रिसोर्स इज सिमिलर टू डिवाइस मैनेजमेंट और यू कैन से द हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। एज फार एज मेमोरी मैनेजमेंट इज कंसर्न, इट्स ऑल अबाउट कि whenever you store some data या किसी मेमोरी से अगर आप किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे एक्सट्रैक्ट करवाना या स्टोर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। सिमिलरली जब आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं या सीपीयू के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। सिमिलरली रिसोर्स मैनेजमेंट इज समथिंग जहां पे डिवाइस को मैनेज करने की बात हो रही है। से फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के साथ जब प्रिंटर कनेक्टेड होता है तो आप एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल, अगर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। इसका मतलब उस डिवाइस के साथ जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सपोज दैट अगर आपका कीबोर्ड, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, कीबोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग तो माइट बी पॉसिबल आपको किसी तरह का कोई एक एरर मैसेज आपके स्क्रीन में मिल जाता है। सो ऑल दीज आर टेकन केयर बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो से दैट इट हेल्प्स योर कंप्यूटर सिस्टम टू get ready for the operations and you can also say it display results on the monitor. So there are various functions, it's up to you कि आप किस तरह से उन functions को यहाँ पे manage करते हैं। So I have taken this memory and resource management. Let's move to the next question now. What is the need of RAM? How does it differ from ROM? RAM is all about random access memory and ROM is all about read only memory. Now the question is RAM की जरूरत क्या है? See, there are 2 different memories. One is called primary and second is what your secondary memory. Primary which stores data temporarily, secondary which stores data permanently. When we talk about the RAM, it is basically considered as primary memory or you can say temporary memory. Question is that why temporary or you can say permanent is needed? The reason is quite easy कि जब आपको कोई एक्सप्लिसिटली डेटा आपका स्टोर करना होता है परमानेंट फ्यूचर यूज के लिए, तब आप सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन चलता होता है, उस दौरान यदि आप कोई डेटा से फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कुछ इनपुट आप करते हैं, तो उसे भी तो सीपीयू में कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। सो दैट स्पेस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एट द सेम टाइम जब आपका सीपीयू कोई ऑपरेशन करता है किसी डेटा के ऊपर, सो माइट बी पॉसिबल कि कुछ आउटपुट्स भी जनरेट होंगे, तो उन आउटपुट्स के लिए भी तो मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। सो दैट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ओवरऑल रैम जो होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जितना भी डेटा होता है, जितना भी प्रोग्राम होता है, इनफैक्ट जब आप किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, ऑल दिस टेक स्पेस इन द रैम। सो
We can say there are lots of uses of RAM, जिसको मैंने यहाँ पे shortlist किया है. You can see when computer starts, the operating system occupies space in the RAM. CPU interact directly with the RAM to perform operations, as I said. And when a software is launched, जब आप start करते हैं, it again occupies space in the RAM. And जितने भी data होते हैं, like जब आप keyboard से कुछ type कर रहे हैं या कुछ output generate होता है, वो सारा RAM में ही होता है. Now, when we talk about the difference between RAM and ROM, it's all about quite easy to understand. Like RAM is volatile in the sense, इसमें जो भी डेटा होता है वंस द कंप्यूटर इज ऑफ पूरा डेटा इरेज हो जाता है. इन केस ऑफ रोम इट इज परमानेंट मेमोरी, सो वी कैन से यहाँ पे जो डेटा होता है इट इज नॉट इरेज्ड अंटिल अनलेस यू वांट. जो रोम के जो डेटा होते हैं या इसके अंदर जो प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं, इट हेल्प्स योर कंप्यूटर सिस्टम टू स्टार्ट. सो यू कैन से इट स्टोर्स स्टार्टअप प्रोग्राम्स, दैट इज बूट लोडर वी से. जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है और उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं, जो बायोस सेक्शन हम बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वहां से रोम का काम शुरू होता है. वहां पे रोम के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं. तो कंप्यूटर को एक्चुअली स्टार्ट करने में रोम के इंस्ट्रक्शंस हेल्प करते हैं. सो जनरली हम इसे डिलीट नहीं करते हैं. और रैम जो होता है, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जितना भी डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, वो सारा रैम में होता है. रैम इज ऑल अबाउट इट कैन बी रीडेबल, इट कैन बी राइटेबल, इट कैन बी इरेजेबल, बट इन केस ऑफ रोम इट इज जनरली read only memory. And RAM is obviously large in capacity and ROM is obviously small in capacity. Let's move to the next question now. What is the need of secondary memory? So we all know that it is all about storing data and instructions permanently for future use. It has large capacity and obviously it is cheaper than main memory, right? So I think I should move to the next question now. And that is what, draw the block diagram of a computer system, briefly write about the functionality of each component. It's again, I think is very easy for you, but I try to explain from my side. You can see in your screen, there are basically 4 things, especially 3. One is input device, then is processing, and third is what, your output device, right? So this is your CPU, this is your input, and this is what, your output device. So input is all about keyboard and all that. Output we all know, like monitor, printer, etc. And when we talk about CPU, it is obviously divided in 3 different sections. One is what, control unit, one is your ALU, and one is what, your MU. We can say it is MU. Most of the time हमारी जो secondary storage की हम बात करते हैं वो external होती है, इसलिए उसे इस एरिया से बाहर हमने रखा हुआ है. बट लाइक हार्ड डिस्क यू कैन कीप इट इनसाइड द सीपीयू, बट अगर हम उसे कंसीडर करेंगे तो इट शुड बी लाइक मेमोरी यूनिट इंस्टेड ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, आई वुड से. सो आप इसको सीपीयू कर सकते हैं. सीपीयू के अंदर आप एएलयू, सीयू एंड एमयू का सेक्शन बना सकते हैं. तो फिर आप इसे अलग से इसे लेने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन फॉलो दिस ब्लॉक डायग्राम. सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ एज फार एज इनपुट डिवाइस इज कंसर्न, वी ऑल नो द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर इनपुटिंग डेटा एंड आउटपुट विच डिस्प्ले रिजल्ट्स. ALU, which is responsible for all kind of operations, and the control unit is all about controlling the transfer of data from various places between 2 different places, like input to CPU or CPU from output or from memory, primary memory to secondary memory, like this. And when we talk about primary storage, obviously RAM we are talking about, or we can say which stores data temporarily, and secondary is obviously permanent memory. So ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, एंड नेम 2 सॉफ्टवेयर ऑफ ईच टाइप. लाइक जब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, इसका मतलब हम एक पर्सनल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं विच इज बेसिकली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, और यू कैन से अ कंपनी. सो वी कैन से इट इज नॉट फ्री टू यूज. एंड फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली इट इज फ्री टू यूज. एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री, और यू कैन से व्हाट, ओपन सोर्स. जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं इट इज अगेन फ्री टू यूज एज वेल एज इसका जो सोर्स कोड होता है वो भी आपके लिए फ्री होता है. फ्रीवेयर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि इट इज ऑब्वियसली फ्री टू यूज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अपने सोर्स कोड को शेयर नहीं करते हैं. यू कैन जस्ट यूज इट, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सोर्स कोड आपको मिलते भी. सो वी कैन से लाइक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज फ्री टू यूज. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेसिकली कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ऑब्वियसली ये चूंकि फ्री टू यूज नहीं होते हैं तो इनके जो कोड होता है, सोर्स कोड होता है, वो टोटली सीक्रेट होता है, वो आपको शेयर नहीं किया जाता है. इट मींस यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली वी कैन मॉडिफाई इट बिकॉज कई सॉफ्टवेयर, नॉट 100% फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, बट सम ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर आर देयर जिसको कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं.
As far as example is concerned, you all know very well, like all the operating system, Microsoft Windows operating systems like Windows 8, 7, whatever you want to say, are basically proprietary software. You have to pay for that. Or right now, if we are using freely, that means we are using its pirated version. Tally is again, proprietary software. You have to pay, some value for this software. Now antivirus, again you have to pay for this also. And similarly, when we talk about the freeware software, so lots of softwares are there like Mozilla, Firefox, Google Chrome, you can say, like OpenOffice, Python is there. In case of here, MS Office, Adobe Photoshop can be like proprietary software. So there are unlimited list of proprietary software and freeware software. So I hope आपको ये फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इजीली समझ में आ रहे होंगे. आई थिंक आई शुड स्टॉप माय वीडियो नाउ. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.